Good evening, everyone. Warm welcome to your own channel. We call it as Exam Norm, and I'm Madhav. I welcome you all in the next session of Finance Norm. It's a finance current affairs session where we discuss all the important notifications, circulars, updates of RBI, SEBI, as well as other regulatory bodies. Along with that, we discuss the other financial world news which are important not only for regulatory bodies exam, but those news are important for your bank exams as well. So before I start with the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine, we are good to go. Give me a thumbs up so that we can quickly begin the discussion without any further delay. So before I start, I would request everyone to have a reply in the comment section. Give me a thumbs up so that we can start. And if you haven't shared the link of this session with your friends, then I would request you quickly copy the link of this session, share it with your friends so that more and more students, they are aware that yes, the session is live and they can join us for sure. ठीक है, आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें हम काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स समझने वाले विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन और कौन कौन से ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स हैं which we are going to discuss. Most important and one of the, I would say, relevant topic as of today is going to be your counter-cyclical capital conservation buffer. So your counter-cyclical conservation buffer is very important. We will be discussing that. उसके ऊपर RBI ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया. We will be discussing that and then we will be moving ahead and we will be talking about the other RBI related circulars as well. ठीक है, तो आज का सेशन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सेशन है. काफी सारी चीजें आज आपको समझ आने वाली है. बट बिफोर आई स्टार्ट, जस्ट गिव मी अ थम्स अप so that we can start. And if you haven't hit the like button, I would request you quickly hit the like button and do share the link of this session with your friends. ठीक है जी, स्टार्ट करें. चलो, let's start with the first point. The first point is, if you remember in the previous session, I have showcased this particular image from the RBI website. I hope you guys remember. जिसमें से अगर आपको याद हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These 7 circulars or these 7 announcements have been covered. Do you remember? Do you remember? So these 7 circulars were covered in the previous session. If you have any doubt from these 7 circulars, you can ask me today itself. There's no worry. Now I will be moving on to the next 3, that is 8th, 9th as well as 10th. ये जो 9th और 10th है, it is exactly the same. It is exactly the same for commercial bank as well as local area banks. बस commercial banks के केस में it is a 6th amendment and for local area banks it is 3rd amendment. But logically the concept is exactly the same. But उसके साथ साथ we have one more important aspect. We call it as Reserve Bank of India's commercial bank prudential norms on capital adequacy. Prudential norms on capital adequacy. ठीक है जी, let's get started. चलो, so the first point from where we are going to start our discussion is, उसको समझ लेते हैं. इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट या मैं कहूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बस एक बार अगर आप इसे सुनेंगे, चीजों को समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी. देयर इज नथिंग टू वरी. तो ये कहता क्या है एग्जामिनर, ये सुनना जरा. आरबीआई कहता है कि सर वी आर कमिंग अप विद द 6th amendment. We are coming up with the 6th amendment with commercial banks that is related to prudential norms on capital adequacy. So firstly, what is the meaning of capital adequacy? We will be discussing that. Secondly, so what is the meaning of prudential? What is the meaning of prudential norms? We will be discussing that. और आज के सेशन के बाद you have a very great visibility of a very important topic जो आपको अभी थोड़ी देर में समझ आएगा. थोड़ी देर याद रखना, ठीक है, थोड़ी देर मेरे साथ रहना, थोड़ी देर ध्यान रखना, ठीक है. अब पॉइंट क्या है सर? पॉइंट बड़ा सिंपल है. पॉइंट ये है कि सर वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू RBI norms, every bank has been asked by RBI to maintain certain reserves, and these reserves are basically maintained in order to counter. These reserves are basically maintained in order to counter the current scenario. In order to counter the current scenario, जो भी आपका बैंक है उसके ऊपर जो भी रिस्क है, उस रिस्क को काउंटर करने के लिए these initiatives have been taken. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक्स के केस में, सो इन
case of banks, bank are asked to calculate risk weighted asset. याद होगा आपको risk weighted asset क्या है सर? It is basically sum of risk on every asset of the bank. So this RWA is calculated with respect to credit risk. I hope you remember that कि भैया अगर बैंक का लोन एनपीए हो गया तो बैंक को जो लॉस होने की कैपेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है, दैट इज क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क के बाद दूसरा जो पॉइंट है या दूसरा जो स्टेटमेंट, दूसरा जो एस्पेक्ट ऑफ रिस्क है, दैट कैन बी योर ऑपरेशनल रिस्क एज वेल एज वी हैव मार्केट रिस्क, ठीक है. अब इन रिस्क को काउंटर करने के लिए, in order to counter these risks, banks, they are asked to maintain adequate capital. Banks are asked to maintain adequate capital. So banks are asked to maintain capital with respect to RWA. That means if we divide the bank's capital with RWA, its ratio should be greater than or equals to 8% according to Basel norms. And it is also written that capital to risk weighted asset ratio is greater than or equals to 9%. This is given by RBI. Now the question over here is, sir, these ratios are need to be maintained. These ratios are need to be maintained by every bank. And when we calculate this RWA, so this RWA basically means risk associated with an asset. So in the previous session, we have discussed investment fluctuation. So it's quite obvious that investment fluctuation is a risk. Say yes or no. कि भैया आज आपने एक कोई एसेट खरीदी, आज आपने कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा और कल को अगर उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू बदल गई, so that will be a kind of risk for you. So in order to counter that risk, you will be maintaining the reserves. Who are you? You are a bank. So those reserves are known as investment fluctuation reserves. अब ये जो investment fluctuation reserves हैं, they are need to be maintained in the capital only. अगर आप उसे मेंटेन कर रहे हैं इन केस ऑफ कैपिटल, तो उससे होगा क्या? तो उससे सिंपल सी बात है, कैपिटल टू RWA रेशियो की बात हो रही है ना. अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से रिस्क वेटेड असेट बढ़ रहा है और अगर मैंने उतना ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स बढ़ा दिया, तो एंड ऑफ द डे दिस रिजर्व्स और एंड ऑफ द डे दिस ratio will remain constant. That means there will be no impact. There will be no impact due to these investment fluctuations. I hope you are getting my point. In that particular case, banks such as commercial banks as well as local area banks, these banks, they were earlier maintaining the investment fluctuation reserves, but now RBI has asked them that there is no need to maintain it. RBI has asked them कि भैया there is no need to maintain these reserves, and if there is no need to maintain these reserves, then it is very clearly mentioned that these reserves, they were maintained under tier 2 capital. अब जिसको लग रहा है कि सर टीयर 2 कैपिटल क्या है, तो आज भैया थोड़ी देर रुक जाओ, आज टीयर 1 टीयर 2 सारे कैपिटल क्लियर होने वाले हैं, कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो अगर मैं कहूं बैंक के केस में, तो बैंक के केस में वी हैव टीयर 1 कैपिटल, secondly we have additional tier 1 capital, and we have tier 2 capital. So this value is basically added to obtain a value of capital, and against this capital we divide this capital or we check this capital with respect to RWA, and this ratio is need to be greater than or equals to 9% as per RBI. ठीक है, सिंपल है. तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, दैट वाज केप्ट इन टीयर 2 कैपिटल. नाउ as per the amendment, it has been clearly mentioned that there is no need to maintain investment fluctuation reserves under the tier 2 capital. बस न्यूज इतनी है, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको समझा दिया. नाउ प्लीज बी विद मी फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. न्यूज खत्म हो जाएगी, न्यूज उड़ जाएगी. So this amendment is closely related to the previous amendment as discussed. So because investment portfolio rules have been changed,
then obviously there has to be a need to modify the capital adequacy framework to ensure both regulations they remain consistent. What is capital adequacy? बहुत बार you read CAR. CAR stands for capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio, or sometimes you call it as capital to risk weighted asset ratio. दोनों एक ही चीज है. What is capital adequacy? So capital adequacy refers to the bank's ability to absorb losses, and remain financially stable. So banks, they face many risks such as credit risk, market risk, as well as operational risk. In order to counter these risks, in order to I would say absorb this risk, banks should have adequate capital, and that capital adequacy basically means the bank's adequate capital, which is adequacy means adequate. Adequate means पूरी सूरी, जैसे हम कहते हैं कि adequate means at least as per the requirement. So capital adequacy means the capital adequate ratio which is required in order to absorb all the losses. Which kind of losses I'm talking about? So I'm talking about credit risk, market risk, as well as operational risk. So to protect the depositors as well as maintain financial stability, RBI required banks to maintain a minimum amount of capital, which is capital to risk weighted asset ratio, which is calculated as capital to RWA into 100, and this ratio according to BIS should be greater than 8%, and according to RBI it should be greater than or equals to 9%. Now the second point is, so what do you understand by the word prudential norms? So capital adequacy क्या है? So capital adequacy का मतलब है capital, how much capital is required, so that how much adequate capital is required to counter the risk. Adequate capital is required to counter the risk, or whether our capital is adequate or not to counter the risk. In other way around, you can take it, you can see it, you can observe it. So prudential norms, they are safely. Prudential norms क्या है? So prudential norms, these are the safety rules which are issued by RBI to ensure banks to operate in financially sound and disciplined manner. So what is this ratio? So capital adequacy means the check whether the capital is adequate or not, and what do you mean by the word prudential norms? Or prudential norms का मतलब है वो safety rules which are issued by RBI so that RBI can ensure that bank is operating in a financially sound and disciplined manner. For example, bank should maintain capital adequacy, it's a prudential norm. Bank should classify its asset and disclose the asset classification with the public, it's a prudential norms. Bank should maintain provisioning against the NPA, it's a prudential norm. Bank should review its investment valuation. Bank should calculate its exposure limit. Bank should manage its risk. All these norms are known as prudential norms. So prudential norms are those rules which are introduced by RBI in order to ensure that banks are operating in a very sound and disciplined manner. So those norms, those initiatives, those rules are under prudential norms. So यहाँ पे कहा जा रहा है commercial banks as well as local area banks. This is same for commercial as well as local area bank. So commercial banks as well as local area banks, their prudential norms on capital adequacy has been revised, which says that while calculating the capital adequacy under the tier 2 capital, now there is no need to include IFR. Now there is no need to include IFR. Is this point clear? Is this point clear? डन है जी? इज इट क्लियर? चलो, तो यहां पे चेंज क्या हुआ है सर? जो सब पैराग्राफ 21 फर्स्ट बी था उसमें लिखा था कि टीयर 2 कैपिटल विल इंक्लूड आईएफआर. नाउ देयर इज नो नीड टू इंक्लूड आईएफआर अंडर टीयर 2 कैपिटल. सो दिस इज द बेसिक चेंज. अब आते हैं हम बाकी दो पे. बाकी दो कौन कौन से हैं? सो दिस वन, दैट इज
Reserve Bank of India's financial statement presentation and disclosure. Financial statement presentation and disclosure. तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करूं, सो व्हाट इज द चेंज गोइंग टू बी अराउंड? सर इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां भी नहीं है, दो तीन बातें हैं जो आपको समझनी है और इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है, जल्दी समझ आ जाएंगी, नथिंग टू वरी। तो सर सबसे पहली चीज क्या है? सर इसमें सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं as well as जो local area banks हैं, now these two banks they have been asked by RBI that there is no need to maintain IFR, and if they are not maintaining IFR in their tier 2 capital, IFR is no more the part, and the existing funds under existing fund under IFR will be transferred to either of the three options I gave you. One is statutory reserves, then we have general reserve, then we have profit or loss account. These reserves which are mentioned on the screen, they are basically termed as, or they are basically included under the category of revenue reserves. So this amendment says that the existing funds under IFR should be credited to revenue reserves only. It should not be credited to the other reserves. Now you must be wondering कि sir other reserves कौन से? Sir other reserves में I hope you might have heard about depreciation, है ना? अब एक machinery है, you are reserving the funds on regular basis against the depreciation. So this depreciation fund will not be the part of revenue reserve. It would not be included under the category of revenue reserves. Along with that, provisions for asset impairment. So वो assets which are not giving returns today, for example loan which has now turned into NPA, so the provisioning which you have done, that will not be the part of revenue reserves, that will not be included as a part of revenue reserves. Then the provisions for known liabilities. What is the meaning of known liabilities? So for example, bank has to pay back the loan borrowed from the market, so that is known liability. So if we are talking about the revenue reserves, revenue reserves only include statutory reserve, general reserve, profit and loss account reserve, but it is very clearly mentioned these existing funds under IFR cannot be included in the other categories like depreciation funds, provision for asset impairment or provision for non liabilities. तो ये पॉइंट आपको याद रखना। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि सर अब आरबीआई ने बहुत क्लियरली ये मेंशन किया, RBI has very clearly mentioned about a term that is the reserves. And the reserves against what? So the reserves against, they use a word non-performing investments. Now the question is, what do you understand by the word non-performing investments? Sir, if this question is asked to me कि sir non-performing investment का क्या मतलब है? So non-performing investment basically means the investment that has stopped generating expected income or it has become impaired. For example, it includes the securities on which interest is not received. It includes the bonds issued by the entities which are now in financial distress. It also includes the investments whose recovery is uncertain, that you may or may not be able to recover your investment. So banks are required to create provisions to cover the possible losses on such investments. So in that particular case, every bank will publish non-performing investment related few datas. What datas have been demanded? So the first data is bank in the starting of the financial year, bank should submit the opening balance, or bank should note down the opening balance
of provisions, opening balance of provisions for non-performing investment, that is first. Second is provision made during the current year, provision made in current year, you have to mention that. Third point is very important. Third point, you have to mention about the write-off. Write-off means you have used the provisions, to write off the NPA. For example, आपका जो loan था, that is now declared as NPA, and now it is in the category of loss asset, and there is a very little or there is no possibility of recovery. So what you have done, आपने उस provision को use किया और वहां से उस NPA को हटा दिया. That NPA is no more a stress asset for you. So that is known as you are wiping up the NPAs, or you're wiping up your bad assets with the provisions, with the reserves you have. So that is write off or write back of provisions during the current financial year. And lastly, you have to give the closing balance. एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल क्या कहता है सर? एग्जाम्पल कहता है कि बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस था ऑफ दीज रिजर्व्स, दैट वाज 120 करोड़. Out of this 120 crores, along with this 120 crores, bank has added 45 crore rupees of provisioning in this year. Along with that, bank has used 10 crores of its provisioning. Bank has used 10 crores of its provisioning to remove the asset from the NPA category. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, what will be that? So the closing balance is going to be 155 crores. तो अब ये तीनों चारों चीजें बैंक is asked to submit in its annual statement. तो जो पहले आप annual statement submit कर रहे थे, उसमें you were not disclosing this, but now you have to disclose कि what was the opening balance, what was the provisioning done, what value of provisioning has been used this year, and what is the current status, what is the closing balance of your provisioning for the non-performing investment. समझ आ गई बात? पढ़ ले, 2 मिनट का काम है, खत्म करते हैं. ठीक है, तो सुनना जरा. The amendment has introduced after RBI discontinued the requirement to maintain investment fluctuation reserves for the commercial banks. So because IFR will no longer be maintained as a separate reserve, RBI has to update accounting and disclosure rules as of 18th of May 2026. RBI has very clearly mentioned the existing IFR balance will be transferred only to the revenue reserves, which are called as, or which include statutory reserves, general reserves, or balance of profit and loss account. What are the main challenges or the main changes? So it has revised the definition of revenue and other reserves. Secondly, it has replaced the disclosure format for the provision of non-performing investment for commercial banks as well as local area banks. So firstly, what is this revenue reserve? So revenue reserve refers to the reserves which are created out of profit, very important, which are created out of profit earned in the ordinary course of business. For example, general reserve, statutory reserve, and other free reserves which are generated. What is excluded? So it excludes depreciation on fixed assets. It excludes provisions for asset impairment, that is credit risk, provisions for known liabilities as well as other similar accounting provisions. They are excluded from revenue reserves. Why this change is important? So since IFR has been discontinued, the balances previously held in IFR will be transferred to the reserve accounts or to the retained earnings, but it won't be added in this segment. It will only be the part of revenue reserves. It cannot be added as a part of capital reserves. Is this point clear? So the revised definition ensures that transfer accounts are properly classified under the revenue and other reserves wherever applicable. This prevents confusion and ensures consistency in financial statement presentation. Actually, तो ये word है revenue and other reserves. तो revenue and other reserves को अगर revenue reserves भी बोल रहे हैं तो भी वो acceptable है. That means you are talking about the reserves which has been maintained out of your revenue, which has been maintained out of your profits.
ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट इज न्यू डिस्क्लोजर on non-performing investment. So commercial banks now they are asked to disclose the information. First is opening balance of provision for NPI, provision made during this year, write off or write back excess, and closing balance. What is this non-performing investment? So these are the investments that have stopped generating expected income, or they have become impaired. They are known as non-performing investment, which includes interest is not received on a security or bonds issued by the entity is in financial distress. The entity is in financial distress, or investment whose recovery is uncertain. Investment whose recovery is uncertain will be the part of non-performing investment. So banks, they are required to create provisions to cover possible losses on such investments. So banks they are required to create provisions to cover possible losses on such investments. What is the purpose? Purpose बड़ा simple है सर. पर्पस बड़ा सिंपल है, और वो पर्पस सिंपल क्या है सर? हम चाहते हैं कि वी शुड हैव अ क्लियर डिस्क्लोजर दैट हाउ मच प्रोविजन इज एग्जिस्टिंग at the beginning of the year, how much provision is added, how much provision is used, and how much provision is the finally maintained at the year end. So ये सारा डेटा रिसीव करने के लिए this initiative has been taken. तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, ये एक आप एग्जांपल पढ़ लेना, and this is all I have. ठीक है जी, क्लियर होगी बातें? तो आई होप ये जो 10 के 10 सर्कुलर्स आपके स्क्रीन पर मेंशन है, I can expect that all the 10 circulars are clear. Give me yes sir. Just give me a second, I'll be right back. Let me get some water for me, and by the time you just read out these 10 circulars. अगर कोई डाउट हो तो पूछो. Is it done? चलो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर. अगला जो अनाउंसमेंट है दैट वाज आल्सो डन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन 18th ऑफ मई ओनली. तो 18th ऑफ मई को एक और अनाउंसमेंट हुई थी आरबीआई की वेबसाइट पे, एंड दैट अनाउंसमेंट वाज as mentioned on the screen. It says that as per the framework of the counter-cyclical capital buffer, which has been announced in the direction which was given in 2025, it was advised that it would be activated as and when circumstances needed, and the decision would normally be pre-announced. So the framework emphasizes on credit gap, that is credit to GDP gap ratio, as the main indicator along with the other supplementary indicators as well. Now it has been decided that there is no need to activate counter cyclical buffer. ये न्यूज़ शायद उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे समझ आएगी, those who are following me from almost 1 year. उनको ये न्यूज़ बिल्कुल कनेक्ट हो रही होगी, बिकॉज ऑन 16th 18th अप्रैल का जो सेशन था ऑन दी अदर प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली जो मैंने कंडक्ट किया था, वहां पे हमने इस न्यूज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आई विल गिव यू एन ओवरव्यू, लेकिन इस ओवरव्यू के साथ साथ एक चीज मैं आपको बता दूं, आई विल बी एडिंग फ्यू थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास. तो आज मैं जो आपको बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब वो एंड ऑफ दिस न्यूज या एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट नहीं है. आई विल बी एडिंग समथिंग इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. पहले आपके डाउट देख लें. सर, इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन दैट
लोकल एरिया बैंक नॉर्म्स आर सेम, नहीं कोई रीजन नहीं है, बिकॉज देयर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स आर सेम, तो इसीलिए उनके ऊपर सेम नॉर्म्स निकाल दिए, क्योंकि भैया दोनों ही मार्केट रिस्क को काउंटर करने के लिए दे आर मेंटेनिंग द रिजर्व्स, सो देयर इज नो नीड टू मेंटेन आईएफआर, दैट इज द रीजन उनके लिए सेम है, सिंपल। So IFR is removed from tier 2 of commercial banks and local area banks only. It will remain same as that of, yes, that's absolutely correct. Yes, Neeraj, that is absolutely correct. ठीक है, अब ध्यान से सुनना आज के सेशन को। देखो, बैंक has been asked by RBI to maintain capital to risk weighted asset ratio, or I would say capital adequacy ratio. So this capital adequacy ratio, which is called as CAR, this is need to be maintained by every bank in the country, regardless of any condition, regardless of any fact. Every bank has to maintain this capital adequacy ratio. There is no if and but in that. Okay. Up. The next point is this capital adequacy ratio is need to be maintained as per RBI 9%, और ये 9% में 5.5% will come from tier 1 capital, then 1.5% will come from additional tier 1 capital, and tier 2 capital से कितना आएगा, so that will be 2%. अब जिसको नहीं पता tier 1 tier 2 capitals क्या है, please pay attention, देख लो। बैंक के केस में the core capital, or I would say the common shareholders capital or the common equity, they all fall under the category of tier 1 capital. So core capital, paid up capital, as well as if the company is issuing the shares, तो उन shares पे company को जो premium मिलता, the premium earned by the company will also be the part of tier 1 capital. Statutory reserves, tier 1 capital reserves, that means reserve arising from the sale of fixed assets, disclosed reserves, as well as the balances in the profit and loss account, that all come in the category of tier 1 capital. Tier 2 capital क्या है? So tier 2 capital में we have the capital raised or the fund raised through perpetual का मतलब होता है सर ऐसे instruments which are not redeemable, not redeemable का मतलब कि भैया आज जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, it's not going to be redeemed. That means in case of preference share as well as debt instruments, we have these non-redeemable instruments, and even it is called that they are valid for infinite time. They are valid for infinite time, but infinite is not clearly defined. So if infinite is not clearly defined, then I would say generally in case of preference share with timeline more than 20 years or maturity year more than 20 years, or in case of debt instrument with maturity greater than 99 years or 90 years, it will be considered as perpetual non-convertible preference shares. Along with that, we have perpetual debt instruments and share premium which the bank has earned from all of them. They all will fall in the category of additional tier 1. Tier 2 capital में कौन आता है सर? Tier 2 capital में आता है general provisions and loss reserves, investment fluctuation reserves, excess provisions from the sale of NPS, counter cyclical provisioning. So that provisioning will be the part of tier 2. Debt capital instruments, perpetual cumulative preference shares, redeemable non-cumulative as well as cumulative preference shares, and undisclosed reserves that will come under tier 2 capital. ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई बात है। तो ये है टीयर 1, एडिशनल टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। अब इसमें से what we want that tier 1 capital ratio, or I would say if I divide this tier 1 with RWA,
with RWA, it should be greater than, or equals to 5.5%. It should be greater than or equals to 1.5%. It should be greater than or equals to 2%, because we know capital to risk weighted asset ratio should be greater than or equals to 9% as per RBI. ठीक है, तो ये स्टोरी है. अब इस स्टोरी में बेसल 3 में कुछ चेंजेस किए गए, और चेंजेस ये थे. बेसल 3 में कहा गया कि सर सिर्फ कैपिटल एडिक्वेसी से बात नहीं बनेगी. banks they are asked to maintain capital conservation buffer as well. So capital conservation buffer क्या है sir? These are the extra buffer maintained. And how this extra buffer is going to be maintained? So this extra buffer is going to be maintained by dividend. तो जो आपका dividend distribute होने वाला था, तो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कि भैया जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है उसे डिस्ट्रीब्यूट ना करो, रादर दैट प्रॉफिट विल बिकम द पार्ट ऑफ रिजर्व्स, और उससे ये सीसीबी की वैल्यू अचीव हो जाएगी. along with that it includes non distribution of dividend as well as non distribution of bonus, कि भैया जो एम्प्लॉइज को बोनस है वो मत दो, या फिर जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनकी जो सैलरी है उसे कम कर लो. तो किसी भी तरह यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. सो बेसिकली जो प्रॉफिट है वो किसका पार्ट है? सो प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टियर 1 कैपिटल. सो बेसिकली इट मींस कैपिटल कंजर्वेशन बफर is going to be maintained out of tier 1 capital. तो tier 1 capital divided by RWA, it should be greater than or equals to 2.5%. 2.5%. This is for capital conservation buffer. अब इतना ही नहीं, एक पॉइंट और आया कि सर अगर आपका बैंक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, then go for counter cyclical buffer. Capital buffer, and this counter cyclical capital buffer is the again excess buffer maintained if required. ये mandatory नहीं है, it is only if required, and it will be having a range of 0 to 2.5%. It is also going to be maintained out of tier 1. It is also going to be maintained out of tier 1 capital. तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरा जो टोटल कैपिटल टू RWA है, that should be greater than or equals to what? So that should be greater than or equals to 14%, है ना, अगर मैं टोटल ऐड कर लूं. और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टियर 1 के लिए ऐड करूं, सो फॉर टियर 1 RWA is greater than or equals to 5.5, 2.5, 2.5. So this is 5 and 5, that is 10.5. So this is the maximum condition. This is the maximum condition. But it is not obviously true. It does not need to be implemented every time. It's not obviously true. It does not need to be implemented every time. So what does need to be done? So in that particular case, it has been very clearly mentioned by RBI. क्या कहा है RBI ने? RBI ने कहा है कि सर counter cyclical capital buffer will be maintained only if credit to GDP of current year minus credit to GDP of long term, which is nominal term, which is actually expected and needed. ये पॉइंट समझ आ रहा है कि सर लॉन्ग टर्म में हम चाहते हैं कि हमारी जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है वो इतनी हो जाए या इतनी हो जाएगी, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है. तो अगर ये गैप ज्यादा होगा, वी कॉल इट एज क्रेडिट टू जीडीपी गैप रेशियो. अगर ये गैप ज्यादा होगा तभी, if this gap of the country is high, then only banks are asked to maintain capital counter cyclical capital buffer, otherwise they are not asked. और अगर इसे मेंटेन करना होगा, the bank will give you, RBI will give you appropriate time. Generally
जनरली आरबीआई विल गिव यू 4 क्वार्टर्स, यानी एक फाइनेंशियल ईयर का आरबीआई आपको टाइम देगा। तो अगर आपको आरबीआई ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अनाउंस किया होता तो अगले फाइनेंशियल ईयर से आरबीआई एक्सपेक्ट करता दैट यस banks they have maintained counter cyclical capital buffer, but as of current situation the credit to gdp gap ratio, credit to gdp ratio, or I would say credit gdp gap ratio is controlled, it is under control। और अगर वो under control में है, अगर वो अंडर कंट्रोल है तो देयर इज नो नीड टू मेंटेन काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि सर फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2026-27 will banks will be maintaining counter cyclical capital buffer, yes or no? My answer is no, as per RBI that is not required। ठीक है जी, पूरी स्टोरी समझ आ गई, पूरी स्टोरी समझ आ गई। अब इसमें दो चीजें और है, वो भी सुन लो, कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज है कि अगर ये मेंटेन करने की बारी आती है सर, वो डिपेंड करता है किस पे? इफ द क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, इफ द क्रेडिट टू जीडीपी गैप रेशियो इज अप टू 3%, इज अप टू 3%, तो उस केस में सीसीबी कितना रिक्वायर्ड है सर? कैपिटल काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर इज रिक्वायर्ड एज 0%। और जैसे ये बढ़ेगा, अब ये गैप क्या है? मैंने अभी आपको बताया, क्रेडिट टू जीडीपी करंट माइनस क्रेडिट टू जीडीपी लॉन्ग टर्म या नॉमिनल टर्म is the credit to GDP gap ratio. If it is greater than 3% and less than 15%, then it will be 0 to 2.5%। अब जैसे जैसे 3 से ऊपर जाते जाओगे, ये 3 से ऊपर जाएगा 15 की तरफ, और ये 0 से ऊपर जाएगा 2.5 की तरफ। अब जैसे ये रेशो 15% क्रॉस करेगा तो ये जो काउंटर साइक्लिकल बफर है, इट इज नीड टू बी मेंटेन्ड एज 2.5% एज पर आरबीआई। It is need to be maintained at a value of 2.5% as per RBI। बोलो क्लियर है यहां तक? तो भैया न्यूज बड़ी सिंपल थी। न्यूज ये थी कि CCyB that is counter cyclical capital buffer is not need to be maintained as per RBI decisions, because the banks or the credit to GDP gap ratio of India or credit to GDP gap is appropriate। credit to GDP gap is appropriate। तो अगर वो appropriate है मतलब वो 3% से कम है, तो अगर वो गैप 3% से कम है, there is no need to maintain CCyB। अब इसकी पूरी स्टोरी हम पढ़ लेते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है सर? इट्स एन इंडिकेटर which is also called as capital adequacy ratio। It is tier 1 capital plus tier 2 capital divided by RWA। tier 1 tier 2 capital क्या है मैंने बता दिए। अब what are the sources? So capital conservation buffer का सोर्स क्या होगा सर? रिड्यूस कर दो डिविडेंड पेमेंट, शेयर बायबैक, रिड्यूसिंग द स्टाफ बोनस as well as tier 1 capital। इसकी मदद से you will be raising the value of capital so that capital conservation buffer can be achieved। For the counter cyclical buffer, the purpose of the counter cyclical buffer is to ensure that bank builds up capital buffer during the normal times। that is when the bank is doing normal, at that time they can build it, which can be drawn down as losses are incurred during the stress period। और उसे आप यूज कर सकते हैं during the stress period for sure। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आ गया as per RBI tier 1 5.5, then we have tier 1 capital is 5.5, then we have tier 2 capital is 2% as well as additional tier 1 capital is 1.5%। तो अगर मैं बात करूं RBI के अकॉर्डिंग what is capital adequacy ratio? So that is 9%। if I include capital conservation buffer which is 2.5, तो ये टोटल बन जाएगा 11.5। if I include the counter cyclical buffer also, then it will become 14.5। लेकिन बेसल नॉर्म्स में दिस वाज 8%, जो कि आरबीआई ने बोला था 9%। हजारों बार बता चुका हूं, इस पे दोबारा बात नहीं करेंगे, आपको पता ही बात। अब अगला पॉइंट आता है सर टीयर 1 कैपिटल से कितना चाहिए? 5.5, एडिशनल टीयर 1 से 1.5,
टीयर 2 से 2%, टीयर 1 का 2.5 और 0 to 2.5%, 0 to 2.5%। ठीक है, अगला पॉइंट देखना, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कहता है कि सर ये जो काउंटर साइक्लिकल बफर की आप बात कर रहे हैं, क्या है ये? सब फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, दिस इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस ड्यूरिंग 2015, wherein it was advised that CCyB would be activated as and when circumstances are needed। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला 2015 में जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि जब रिक्वायर्ड होगा तभी इसे इंक्लूड किया जाएगा। तो एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया गया था बाय आरबीआई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी महापात्रा, which has submitted the final report on the implementation of counter cyclical capital buffer in July 2014। The report made recommendation in the area such as indicators should be used for CCB और ट्रिपल CB decisions, और वो क्या indicators होंगे, that has been witnessed। So वो indicators की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है, so counter cyclical capital buffer is firstly it requires banks to build up a buffer of capital during good times। जब बैंक अच्छा काम कर रहा है भैया तब मेंटेन करो। Secondly, achieve the macro prudential goals of restricting the banking sector from indiscriminate lending। तो इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो क्या सर, जब बैंक अच्छा काम कर रहा है तो भैया उस अच्छे काम के समय जब बैंक इज डूइंग वेल, यू कैन मेंटेन द रिजर्व्स व्हिच विल हेल्प यू इन द टफ टाइम। दूसरा एक और पॉइंट है, वो क्या सर, व्हेन बैंक इज डूइंग वेल दैट मींस बैंक इज इन अ पोजीशन टू लेंड ह्यूज अमाउंट, और अगर हमने बैंक को रूम दे दिया देन बैंक विल बी गेटिंग इनटू इमेंस क्रेडिट, और अगर बैंक क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम इट मे हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ड्यूरिंग द टफ टाइम। तो इसके लिए बैंक को आरबीआई मना तो कर नहीं सकता कि लोन मत दो, तो बैंक ने क्या कहा, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पैसा ही कम कर दो ना, बैंक के पास बहुत पैसा है, बहुत उछल रहा है, बहुत लोन दे रहा है, चल भैया ये ले सीसीबी मेंटेन कर, और सीसीबी मेंटेन करने के लिए वो कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, और कैपिटल इंक्रीज करने के लिए पैसों को होल्ड करना पड़ेगा। यू हैव टू होल्ड द फंड्स रादर देन गिविंग देम ऑन लोन। You have to hold the funds rather than giving them on loan. So it will achieve restricting the banking sector from indiscriminate lending in the period of excess credit growth that have often been associated with the building of system wide risk। तो एक तो आपका रिस्क कम हो गया, और दूसरा आपने रिजर्व्स मेंटेन कर लिए फॉर द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली कहा गया कि सर इट इज गोइंग टू बी मेंटेन्ड आउट ऑफ टीयर 1 कैपिटल एंड इट इज नीड टू बी मेंटेन्ड एट अ वैल्यू ऑफ 2.5% of RWA, that is risk weighted asset। अब पॉइंट आता है सर ये क्रेडिट टू जीडीपी गैप क्या है? सर क्रेडिट टू जीडीपी गैप इज बेसिकली द डिफरेंस between the credit to GDP ratio and the long trend value of credit to GDP ratio at any point in time। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? तो एक तो आपका करंट को माइनस करना है, उसमें से माइनस करना है क्या सर, जो लॉन्ग टर्म हमारी वैल्यू आने वाली है, और अगर वो gap is greater than 3%, then only it will be maintained। Now, what are the supplementary indicators? So that is CD ratio, that is industrial outlook, as well as interest coverage ratio। If the bank is capable of covering its interest, then it's fine, otherwise it will also be taken into consideration। तो इन सारे के सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन जो बेसिक डिसीजन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट टू जीडीपी गैप। सो the lower threshold of the credit to GDP gap where the CCB is activated, that is 3%। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे, सर्कुलर पढ़ोगे, उसमें ऐसा लिखा है, कुछ समझ नहीं आएगा, ये डायग्राम से सब समझ आ जाएगा। क्या कह रही है डायग्राम कि सर अगर आपका क्रेडिट टू जीडीपी, अगर आपका क्रेडिट टू जीडीपी गैप अगर आपका क्रेडिट टू GDP gap below 3% है, in that particular case it will be 0%। 3 से ज्यादा तो it will start 3 to 15 it will be 0.25%, 15 से ज्यादा तो it will be 2.5%। तो यहां देखो सर, जैसे जैसे इट्स क्वाइट ऑब्वियस ना कि जैसे जैसे आपका क्रेडिट टू जीडीपी गैप इंक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज फ्रॉम 3 to 15%, वैसे वैसे आपका जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है
वो भी ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा टिल द वैल्यू ऑफ 2.5%। इससे नीचे जीरो था सीसीबी जब आपका गैप कितना था, दैट वाज बिलो, व्हेन द गैप वाज बिलो 3%, और जैसे ये 15% से ज्यादा जाएगा देन इट विल बी फ्लैट 2.5%। इट विल बी फ्लैट 2.5%। बता चुका हूं। अब वो कितना इंक्रीज होगा वो हमारे काम का नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया है, जिसको लगे कि पढ़ना है पढ़ लेना, वैसे मैंने लिख दिया, बट हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है। ठीक है। सो फॉर ऑल बैंक्स इट इज नीड टू बी मेंटेन्ड ऑन सोलो बेसिस एज वेल एज ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। तो बैंक अगर सोलो मेंटेन करेंगे, कंसोलिडेटेड तो मेंटेन हो ही जाएगा। All banks operating in India, both foreign as well as domestic banks, they have to maintain it. Banks incorporated in India having international presence have to maintain adequate capital under CCB as prescribed by the host supervisor in the respective jurisdiction। तो भैया ये जो वैल्यू है जिस भी कंट्री में जितना भी बोला गया उतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा एज पर द गिवन अनाउंसमेंट्स, एज पर द गिवन अनाउंसमेंट्स। यहां तक कोई डाउट तो पूछो। इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजर टू कंट्रोल क्रेडिट फ्लो। एक हद तक, आई नॉट से दैट यू आर 100% करेक्ट दीपक, एक हद तक सही है, बट इट्स नॉट ओनली फॉर दिस पर्पस अलोन, है ना, इट्स नॉट ओनली फॉर दिस पर्पस अलोन, इसीलिए एक हद तक सही है, 100% सही नहीं है। नेक्स्ट इज सीसीबी एंड सीसी गिव इंटरेस्ट टू बैंक्स। कहां से आएगा इंटरेस्ट, कहां से आएगा इंटरेस्ट, कहां से आएगा, मुझे नहीं पता भाई, मुझे बता दो कहां से आएगा इंटरेस्ट। ये तो आपको रिजर्व्स, ये तो कैपिटल है ना। अब इसमें अगर मान लो कि ये जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट है, उसमें ये जो आपने काउंटर साइक्लिकल बफर मेंटेन किया, ये टीयर वन कैपिटल में से मेंटेन होगा। अब टीयर वन कैपिटल में या तो आपका पेड अप कैपिटल है, या जिसे हम कॉमन कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल कहते हैं वो है, या फिर उसी में आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के रिजर्व्स हैं, उसी में आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व है, और इसमें कोई भी ऐसा रिजर्व नहीं है जिसमें आप पैसा जब इन्वेस्ट करो तो आपको कोई रिटर्न मिलेगा। इसमें कोई ऐसा रिजर्व नहीं है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको रिटर्न मिलेगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस इट्स रॉन्ग, बट हाँ अगर अलाउड हो कि आप किसी असेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां आपको रिटर्न मिल जाएगा ऑन योर रिजर्व्स, then you can get return on your reserves, but यहाँ पे the thing is very different। CAR is maintained by bank with themselves। ठीक है, जो CAR है वो बैंक अपने पास ही मेंटेन करके रखता है। एक्चुअली ये बैंक की कैपिटल है ना यार, तो बैंक की कैपिटल का RWA से रेशियो की बात हो रही है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 9%। उसमें अगर हमने सिर्फ टीयर वन की बात की तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 5.5%, that should be greater than 2.5%, and even that should be greater than 2.5%। ये तो श्योर ही है, इतना तो होना ही चाहिए क्योंकि कैपिटल कंजर्वेशन बफर तो हम रोज ही मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये बन गया 8%, और अगर ये अलाउड है, मतलब आरबीआई ने अनाउंस किया कि ये भी मेंटेन करना है, तो फिर ये हो जाएगा 10.5%, फिर ये हो जाएगा 10.5%। डन हो गया जी। करंट रेशियो इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, नहीं नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऑनेस्टली मुझे भी याद नहीं है, पढ़ी तो थी मैंने आज ही बट मैं भूल गया। दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है और दोनों मुझे याद भी नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट। ठीक है जी, अगला पॉइंट देखो। अब अगला पॉइंट ये है कि सर अगर बैंक की जो कॉमन इक्विटी टीयर वन कैपिटल है, जैसा कि मैंने कहा इट शुड बी मिनिमम 5.5%। If I include capital conservation buffer, then it is 8%. And if I include
काउंटर साइक्लिकल बफर इट विल बी 10.5%। तो यहाँ पे आरबीआई क्या कहता है, इफ बैंक्स कॉमन इक्विटी टीयर वन capital common equity tier 1 divided by RWA is 10.5%, then there is no restriction, on dividend payments, there is no restriction on share buybacks, there is no restrictions on staff bonus payments, क्योंकि आपके पास requirement से ज्यादा capital है. But if your capital is somewhere between 9.25 to 10.5%, 9.25 to 10.5%, then in that particular case, there will be a restriction of 40%. If it is 8 to 9.25, then the restriction is 60%, yani 60% you cannot distribute as dividend. Baki 40% ko you can distribute as dividend. Then 6.75 to 8%, in that case your restriction is 80%. Or agar it is 5.5 to 6.75%, then it is restriction is going to be 100%. Obvious है ना सर, ये चाहिए था 8 मिनिमम, अभी है सिर्फ 5 और उधर से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो गलत है. उसी डिविडेंड को यूज करो ना, कीप इट एज अ कैपिटल, कीप इट एज अ प्रॉफिट बैलेंस, so that your capital value increases, so that these ratios can be achieved. तो वो तो गलत है. तो उस केस में restriction, that means you are not allowed to distribute dividend, share buybacks and staff bonus. So bank will be subject to restriction on discretion or on discretionary basis if they do not meet the requirement for capital conservation buffer as well as counter cyclical capital buffer. ठीक है जी. This is something which you need to remember. यहाँ पे एक और पॉइंट है, वो क्या सर, the term common equity tier 1 ratio bands are structured in the increment of 25%. 25% कैसे, 5.5% plus 25% of CCB, जो कि 2.5% का 25% का 2.5% का 25% कितना होगा, सो दैट विल बी 0.625%. 25% काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर का कितना होगा, सो 0.625. तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना बना सर, इट विल बी 1 पॉइंट, कहीं कुछ गलती कर दी क्या मैंने, कहीं कुछ गलती कर दी क्या, 25%, 25 का 25 तो कितना बनेगा, 25, 2.5, this is going to be 6.5 only है ना. This is 0, this is 5, और इसको अगर मैं ऐड करूं, if I'm going to add this, what will be the value? So if I'm going to add this, the value is going to be 0.625, 0.625, 0, 5, 13, 1.35, 1.35. कहीं कुछ गलती की है क्या, अरे चेक करना है यार. 25% के हिसाब से इन्होंने ये बफर्स बनाए हैं, तो इन्होंने कहा कि 5.5 में दे हैव एडेड 25% ऑफ CCB एंड 25% ऑफ काउंटर साइक्लिकल बफर. और अगर मान लो कि काउंटर साइक्लिकल बफर which has been announced, counter cyclical buffer which has been announced by RBI as 2.5% only, 25 into 25, 625 नहीं होता, it is 675, 1.250. आप कह रहे हो दिस 6.25, अच्छा 1 point, हाँ सही तो है, 1.250. So if I add 5.5 in it, it comes out to be 6.75 only. अब 6.75 में फिर से 1.25 ऐड कर दो. I hope you are getting my point. है ना, इस तरह से with this manner we will be able to calculate the ratios. If it is clear, give me yes sir. If there is any doubt, you may ask please. तो हर बार what will be added? So 1.25% will be added. That is 25% of
CCB plus triple CB. Keeping in mind, I am assuming that triple CB announced by RBI is 2.5%. Announced by RBI is 2.5%. अब मान लो कि RBI ने अगर इसे कुछ और अनाउंस कर दिया, then this entire ratio, this entire format will change. For example, अगर मैं कहूँ कि counter-cyclical buffer asked by RBI is not 2.5. RBI has asked it to maintain at 1% only. So if RBI has asked it to maintain at 1%, so it is 0.625% plus 0.025% of 1%, है ना? 25% of 1%. अगर 25% of 1% है, it comes out to be 0.025, है ना? 0.025. इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, then it comes out to be 0.56. तो अगर मैं 5.5 में ऐड करता हूँ इसे, it will come out to be, पता नहीं यार आज मेरी कैलकुलेशन को क्या हो गया, देख लेना, मतलब जहां भी गलती हो रही है कैलकुलेशन की हो रही है, आप देख लेना। तो इसका भी 20-25% दोनों का ऐड करेंगे, और उसके बाद ये जो हमने गैप ऐड किया, the gap which we are going to add, that gap will be added for every stage. तो यहाँ पे ये जो gap है, this gap is 25% of capital conservation buffer plus counter cyclical capital buffer. तो ये counter cyclical capital buffer RBI डिसाइड करेगा कितना होगा, because it depends on the gap, that is credit to GDP gap. लेकिन CCB तो फिक्स्ड है, that is 2.5%. तो उसके बेसिस पे this calculation will be done. उसके बेसिस पे this calculation is going to be done. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट. एंड दिस गैप इज 20%. ये जो गैप है ये 20% का, ये गैप आप कैलकुलेट कर लोगे, और अगर आरबीआई ने, वैसे तो आरबीआई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अगर पूछा तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट फॉर श्योर. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट. इफ इट इज क्लियर जस्ट गिव मी यस सर. If it is clear, just give me yes sir, then we'll quickly solve a question on the same. Then we'll quickly solve a question on the same. जिसको अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, कि कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने इतनी डिटेल में इसको जानबूझ के नहीं पढ़ाया. अगर किसी को लग रहा है कि सर अभी भी चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हुई, तो मेरे प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे मैंने ये क्लास ली थी ऑन 16th 18th अप्रैल. तो आप सर्च करेंगे, जब आप सर्च करेंगे तो 16th 18th अप्रैल 2025 का मेरा एक सेशन है फाइनेंस करंट अफेयर्स का. उसमें मैंने बहुत डिटेल में यही टॉपिक पढ़ाया. तो आप जाके चेक कीजिएगा, कोई डाउट आएगा तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा. वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में अभी भी पढ़ाया, लेकिन उसमें मैंने और ज्यादा चीजें डिटेल में पढ़ाई है. बट नाउ आई बिलीव दैट यू गाइज आर मैच्योर, तो इसलिए मैंने उतना बेसिक से नहीं पढ़ाया. अगर इफ यू वांट टू चेक मोर बेसिक्स यू कैन गो विद दैट. द डेट्स आर मेंशन्ड 16 to 18 अप्रैल 2025 फाइनेंस करंट अफेयर्स बाय माधव. ऐसा लिखेंगे अगर आप यूट्यूब पे तो आपको सेशन मिल जाएगा. क्वेश्चन सॉल्व करो. काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर इज रिक्वायर्ड to be maintained in the form of common equity tier 1 capital or other loss absorbing capital, and its size is 0 to 2.5% of the bank's total risk weighted asset. सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Counter cyclical capital buffer is triggered only based on credit to GDP gap. Other macro or banking sector indicators are not considered. This is wrong. RBI may pre-announce counter-cyclical capital buffer activation with a lead time of 4 quarters. बिल्कुल सर, RBI को 4 क्वार्टर्स जनरली देने पड़ते हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो बिना टाइम दिए भी RBI डिमांड कर सकता है. ये करेक्ट है. All banks, whether foreign or domestic banks, they have to maintain CCB in India based only on their Indian exposure. Yes. But if a bank which is operating outside India, then they will be maintaining CCB on the basis of the norms of the foreign country, on the basis of their exposures in the foreign countries. Indian bank with international
operations are not required to maintain CCB. ये गलत है सर, उन्हें तो मेंटेन करना ही होगा, but that maintenance will be done as per the host country. That maintenance will be done as per the host country requirement. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट? I hope it is clear. If you still have any doubt, you may ask, please. If you guys still have any doubt, you may ask, please. I hope the answer to this particular question is clear. कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी? सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट. सेकेंड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्यों सेकेंड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है? आई गेस दैट शुड बी क्लियर टू यू. सेकेंड गलत है ना यार, सोली नहीं है ना, इट्स नॉट सोली. यहाँ पे अगर आप देखो, indicators shall be used along with, so credit to GDP gap is the main indicator along with GNP, that is gross non performing asset growth. तो ये दोनों इंडिकेटर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि भैया क्या एक्टिवेट होगा या नहीं, और उसके अलावा सप्लीमेंट्री इंडिकेटर्स और भी हैं. तो एक इंडिकेटर तो नहीं हुआ ना. इफ इट इज नॉट वन इंडिकेटर, दैट कैन नॉट बी, then it cannot be came with this term. So final decision, Reserve Bank use its discretion to use all or some of the indicators. ये RBI की पावर है, लेकिन RBI जनरली सारे इंडिकेटर्स को यूज करेगा टू कम अप विद द आंसर. चलो, होमवर्क क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. बाय द टाइम आई विल ट्राई टू आंसर अ डाउट. एक डाउट आया कमेंट सेक्शन में, देख लेते हैं. Sir, in the last financial year, gross NPA was 2.5 and net was, so sir, it is, we can able to achieve 0% both NPA in upcoming years because RBI not leave any gap for creating NPA. दोबारा सौरभ, क्या कह दिया आपने कि सर पिछली बार NPA कम था, so sir, is it we can able to achieve 0% both NPA? चलो, इम्प्रैक्टिकल है, बट मान लिया कि इंडिया ने अचीव कर लिया 0% एनपीए, इंडिया ने अचीव कर लिया, ठीक है. तो उससे क्या होगा? बिकॉज आरबीआई नॉट लीव एनी गैप फॉर क्रिएटिंग एनपीए. मतलब आरबीआई एनपीए बनने ही नहीं दे रहा, एनपीए होने ही नहीं दे रहा, ये कहना चाह रहे हो? ठीक है, तो मान लो, हाइपोथेटिकल है सारी चीजें, तो मान लो. Even though IFR Tier 2 removed, still the minimum 2% of Tier 2 ratio needed to maintain, so additional capital of the same value of Tier 2 capital will be created. Yes, that will be created. Harman, that is absolutely correct. वो create करनी पड़ेगी. That is absolutely correct. But बैंक के point of view से सोचो ना, बैंक के point of view से Tier 2 capital में 2% तो achieved है, और बैंक की जो Tier 1 capital है उस पे डिपेंडेंसी ज्यादा, उस पे लोड ज्यादा. और ये जो आपने आईएफआर कम किया, ये आईएफआर जाके तो किसमें जुड़ गया? टीयर 1 में जुड़ गया ना हरमन. इफ इट हैज बीन एडेड इनटू टीयर 1, तो टीयर 1 ऑटोमेटिकली बढ़ गई बैंक की, तो बैंक के लिए वो तो पॉजिटिव सिचुएशन हो गई ना. टीयर 2 तो 2% है, दैट इज अचीवेबल. टीयर 1 इज 10.5%. अगर मैं दोनों तीनों को मिला लूं, दैट इज टफ. तो उसके लिए ये एक एड ऑन है, एड ऑन है तो एक सप्लीमेंट है, एड ऑन है तो एक बेनिफिशियल है. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? Okay, that will be all from my side, guys. We'll catch you in the next session. Bye bye, take care, good luck, God bless you all, and don't forget to give me the answer of this question in the comment section below. मजा आ रहा है? जरूर सेशंस को रेगुलरली देखिए. मैंने नोटिस किया है you guys are ignoring the month of May sessions, but पता नहीं क्यों April and May, these are the 2 months especially for RBI circulars जहां से majority questions आएंगे. Don't ignore them, don't ignore them, वरना May month को लास्ट में कवर करना टफ होगा. It's better to invest 1 hour every day for the finance current affairs of May month so that it can be covered within the given timelines. ठीक है जी, चलो, we'll catch you in the upcoming sessions. Bye bye, take care, good luck, see you soon.